Hello dear students. So in today's session we'll see concept of armature reaction in DC machine. So आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन का कंसेप्ट डीसी मशीन में. Say what is armature reaction first? Armature reaction is basically the effect of armature flux on the main field flux. How the armature flux is affecting the main field flux, that is what armature reaction. So armature reaction की बात आप तभी करेंगे जब आर्मेचर फ्लक्स का एग्जिस्टेंस होगा. अब आर्मेचर फ्लक्स का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब आर्मेचर करंट का एग्जिस्टेंस होगा. अब आर्मेचर करंट का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब मशीन लोडेड होगा, मशीन ऑन लोड कंडीशन में काम कर रहा होगा. In case of generator is supplying some electrical load. In case of motor is driving some mechanical load. Okay. So on load condition में ही आर्मेचर करंट का एग्जिस्टेंस होगा एंड आर्मेचर करंट का जब एग्जिस्टेंस होगा तभी आप आर्मेचर फ्लक्स के इफेक्ट की बात करेंगे on the main field flux, and whatever the effect of the armature flux on the main field flux, that is what the armature reaction. Okay. So for time being, for the better understanding of armature reaction concept, we have considered the simplest structure of two-pole DC machine. This is what your electromagnet based DC machine, where the field coils are present to produce the main magnetic flux. Okay. Where the current carried field windings, करंट का डायरेक्शन को भी दिखाए हैं फील्ड वाइंडिंग का. ओके, देखिए फील्ड वाइंडिंग्स करंट कैरी कर रहे हैं एंड टू फॉर्म व्हाट फील्ड पोल्स. सो सी द लेफ्ट साइड हियर, लेफ्ट साइड पोल would be your north pole and right side pole would be your south pole. Okay, if it is your north pole and this is your south pole, then magnetic flux or main field flux would be directed from left to right in the air gap. So field flux lines को दिखाए हैं रेड कलर्ड सॉलिड लाइन से दिखाए हैं मेन फील्ड फ्लक्स को. ओके, अब देखिए आर्मेचर रिएक्शन को समझने के लिए दो केसेस कंसिडर कर रहे हैं. पहले जब अकेला फील्ड फ्लक्स ही एग्जिस्ट करेगा तब की क्या स्थिति होगी, और जब फील्ड फ्लक्स के साथ साथ आर्मेचर फ्लक्स भी एग्जिस्ट करने लगेगा तब की क्या स्थिति होगी. ऐसा वी आर जस्ट एनालाइजिंग दीज टू केसेस हियर. ओके, नो लोड कंडीशन होगा ऑब्वियसली, तभी ओनली फील्ड फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा. ओके, सो नो लोड कंडीशन में बात करें जिस समय ओनली फील्ड फ्लक्स का एग्जिस्टेंस है, आर्मेचर फ्लक्स जीरो है, तब क्या होगा. इस नेट फ्लक्स or resultant flux would be only what? Would be only main field flux. Resultant flux would be equal to main field flux phi m only, and resultant flux का अगर main field flux को किसी एक वेक्टर से दिखाया जाए then this would be what? The phi m vector directed from left to right perpendicular to ZNA. Okay, this is what the geometric neutral axis or geometric neutral plane. Now this condition, इस कंडीशन में रिजल्टेंट फ्लक्स का कितना कंपोनेंट और क्या रिजल्टेंट फ्लक्स का कंपोनेंट जो मिलेगा अलोंग जीएनए वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. रिजल्टेंट फ्लक्स का कंपोनेंट जीएनए के अलोंग जीरो मिलेगा. कहने का मतलब एमएनए भी जीएनए पर ही कोइंसाइड करेगा. यू नो एमएनए इज द एक्सिस अलोंग विच द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फ्लक्स इज जीरो. सो एमएनए भी जीएनए पर लाई करेगा. किस केस में? नो लोड कंडीशन में, जब अकेला फील्ड फ्लक्स का एग्जिस्टेंस है. सो आप एनालाइज कर लिए नो लोड कंडीशन में जब ओनली फील्ड फ्लक्स का एग्जिस्टेंस है तब जीएनए और एमएनए जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं. ओके, नाउ अब बात करते हैं ऑन लोड कंडीशन की. जब फील्ड फ्लक्स के साथ साथ आर्मेचर फ्लक्स का एग्जिस्टेंस भी है ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्मेचर करंट अलोंग विथ फील्ड करंट. ओके, अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं मशीन लोडेड है. फॉर टाइम बीइंग वी हैव कंसीडर्ड इट्स अ जनरेटर
where the armature is being rotated with the help of the prime mover in clockwise direction. So armature को clockwise direction में अगर rotate कराया जाएगा, then armature conductors flux cut करेंगे and flux cutting action के चलते होगा क्या? armature conductors में EMF induced होगा as they are supplying the load, as the armature is connected to load, armature conductors के through current का भी flow करेगा, means induced current का भी existence होगा. Okay, direction of induced EMF or induced current can be determined by applying Fleming's right hand thumb rule. Okay, Fleming's right hand thumb rule apply करने के बाद आप determine कर पाएंगे what would be the direction of the induced current in the armature conductors lying in the north pole region. Okay, you can happily determine the direction of armature current. आप easily इसको determine कर सकते हैं just by applying the Fleming's right hand thumb rule. I already have given the idea how to apply the Fleming's right hand thumb rule for the determination of induced current or induced EMF direction. Okay, in the other video sessions. Okay, so आप पाएंगे नॉर्थ पोल के रीजन में जितने भी कंडक्टर्स हैं सभी के थ्रू फ्लो करने वाला करंट का डायरेक्शन इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगा एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल विथ क्रॉस. ओके, उसी तरह से साउथ पोल के रीजन में लाई करने वाले जितने भी कंडक्टर्स होंगे सभी के थ्रू फ्लो करने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल विथ डॉट. अब करंट कैरी कर रहे हैं आर्मेचर कंडक्टर्स. सभी आर्मेचर कंडक्टर्स करंट कैरी कर रहे हैं. Whenever there exists current, there will exist magnetic flux. Whatever the nature of the current, the same nature will be followed by the magnetic flux. Okay, so armature conductors जो है अब current carry कर रहे हैं on load condition में. अब armature conductors का corresponding fluxes भी होगा and magnetic flux lines will complete their path in either clockwise direction or counterclockwise direction based on the direction of the induced current in the corresponding conductor. So crossed conductor का जो corresponding flux होता है that would complete their path in clockwise direction. So crossed conductor have their corresponding flux which completes their path in clockwise direction. In similar manner, dotted conductor का जो corresponding flux होता है that will complete their path in counterclockwise direction. So dotted conductors का जो flux है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना पाथ कंप्लीट करेंगे, क्लोज पाथ कंप्लीट करेंगे एंड दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स रूल और सिंपली बाय अप्लाइंग द स्क्रू रूल. द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द स्क्रू रूल और सिंपली फ्लेमिंग्स रूल. ओके, सो आर्मेचर फ्लक्स को दिखाए हैं. क्रॉस्ड कंडक्टर का आर्मेचर फ्लक्स ये है एंड डॉटेड कंडक्टर्स का जो armature flux है is what your armature flux of the dotted conductor. Okay, you can see here. अब देखिए, अब हमारा कंसिडरेशन है आर्मेचर फ्लक्स के प्रेजेंस में अब क्या होगा जब फील्ड फ्लक्स के साथ साथ आर्मेचर फ्लक्स का भी एग्जिस्टेंस है तब क्या होगा. ओके, अब देखिए, you can see here net armature flux is directing in downward direction. Net armature flux को भी अगर एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए then it would be represented by vector which is directed in downward direction for this particular diagram. So armature flux को exactly downward direction में दिखाया गया है and see this armature flux is just crossing the main field flux or not. Net armature flux is just crossing the main field flux. As the armature flux is crossing the main field flux, whatever the effect of this particular crossing component of the armature flux is that effect is called what? Cross magnetization effect of armature reaction. Okay, अब से armature flux के presence में at one of the pole tip region, you can see in this pole tip region, this armature flux trying to weakens the main field flux. इस खास पोल टिप रीजन में आर्मेचर फ्लक्स जो है मेन फील्ड फ्लक्स को घटाने की कोशिश कर रहा है. कैसे बोल रहे हैं घटाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स इज अपोजिट टू द मेन फील्ड फ्लक्स. ये इंडिकेशन है
कि आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को वीकेन करने की कोशिश कर रहा है, घटाने की कोशिश कर रहा है। ओके, उसी तरह से दूसरे पोल टिप पर देखिए, इस खास पोल टिप पर वही आर्मेचर फ्लक्स जो है मेन फील्ड फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथेन करने की कोशिश कर रहा है। सो एट दिस पर्टिकुलर पोल टिप रीजन armature flux is strengthening the main field flux, and at this particular pole tip region armature flux is trying to weaken the main field flux. So a strengthening effect is taking place at one of the pole tip and weakening effect is taking place at other pole tip. उसी तरह से दूसरे पोल में भी देखिए, इस साउथ पोल के इस खास पोल टिप रीजन में आर्मेचर फ्लक्स जो है वो अपोज कर रहा है मेन फील्ड फ्लक्स को। कहने का मतलब इस खास पोल टिप रीजन में आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को घटाने की कोशिश कर रहा है, वीकेन कर रहा है, एंड उसी तरह से यही आर्मेचर फ्लक्स जो है सेम साउथ पोल का दूसरा पोल टिप रीजन में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथेन करने की कोशिश कर रहा है। You already have the concept of pole tips. What is pole tip? Pole tip are defined based on the direction of rotation of the armature. Okay, whenever or the pole tip at which armature conductor enters into magnetic field region or polar region, that particular pole tip is called leading pole tip, and the pole tip at which conductor leaves the magnetic field region, that particular pole tip is called trailing pole tip. Okay, सो जनरेटर के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कंसीडर किए हैं। देन सी दिस पर्टिकुलर पोल टिप, एट दिस पर्टिकुलर पोल टिप व्हेन कंडक्टर कम्स ऐसा इट वुड एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ओके, सो दिस पोल टिप इज LPT, दिस व्हाट योर LPT, लीडिंग पोल टिप फॉर जनरेटर, एंड एट दिस पर्टिकुलर पोल टिप अगर कंडक्टर इस पोल टिप को क्रॉस करेगा, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड रीजन को छोड़ देगा, लीव करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन को छोड़ देगा, दिस इज व्हाट ट्रेलिंग पोल टिप TPT. In similar manner, then also this would be your LPT and this would be your TPT for generator. यही अगर मोटर की बात करें तो you know for the same direction of armature current, if the generator rotation is considered in clockwise direction, then motor rotation should be considered in counter clockwise direction. So motor rotation को आप counter clockwise direction में consider करेंगे, this is what your motor rotation direction. Then say TPT of generator would act as LPT for motor, and LPT of generator would act as TPT of generator. So say please, in case of motor, TPT of generator acts as LPT for motor. In similar manner, LPT for generator will act as TPT for motor. Okay, क्यों है ऐसा? Because if direction of the rotation of a generator is considered in clockwise direction, then for the same direction of armature current is motor direction should be considered in counter clockwise direction. Okay, already इस concept को बता चुके हैं, why it is so, ऐसा क्यों करते हैं। सो गौर करिए, जनरेटर के लिए ये TPT रीजन में स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट हो रहा है एंड LPT रीजन में फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ आर्मेचर फ्लक्स strengthens the main field flux at trailing pole tip and weakens the main field flux at leading pole tip. ओके, अब देखिए, अगर ये मशीन आइडियल मशीन होता, देना LPT पर जितना एक्सटेंट में वीकनिंग इफेक्ट होता उतना ही एक्सटेंट में TPT पर फ्लक्स स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होता। मींस इफ इट इज एन आइडियल मशीन, अगर ये आइडियल मशीन होता जिसमें कोई सैचुरेशन प्रॉब्लम नहीं होता, देन उस खास केस में एक पोल टिप पर जिस एक्सटेंट में फ्लक्स घटेगा
उसी एक्सटेंट में दूसरे पोल टिप पर फ्लक्स बढ़ जाएगा। मीन्स फॉर आइडियल डीसी मशीन the strengthening effect at one pole tip is equal to weakening effect at other pole tip. Therefore what? Net average flux would not alter. Net average flux में कोई alteration means कोई modification नहीं होता. So in case of ideal DC machine there would be no saturation problem, and if it is so, then the extent of the flux weakening effect would be equal to the extent of flux strengthening effect at other pole tip, and therefore there would be no modification in the net average flux, so that the effect of armature reaction would be purely cross magnetization only. Now practical machine में क्या होगा is they always will possess saturation effect, and ड्यू टू सैचुरेशन होगा क्या, किसी भी खास पोल टिप का एक फिक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा। मींस ये कितना मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी रिटेन कर सकता है और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितना हो सकता है किसी भी खास पोल टिप का, वो फिक्स होगा अप टू सैचुरेशन। ऐसा अगर फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, किसी खास पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, देन इंक्रीज होने से अगर सैचुरेशन पॉइंट को एक्सीड कर जाएगा, देन फ्लक्स डेंसिटी में इंक्रीमेंट फर्दर नहीं होगा। ओके, सो सिंपली कहने का मतलब क्या, ड्यू टू सैचुरेशन इफेक्ट इन प्रैक्टिकल डीसी मशीन द स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट इज ऑलवेज लेसर देन द फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट। अब स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट जो है वो फ्लक्स वीकनिंग इफेक्ट से कम होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये टीपीटी पर जितना स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होगा वो कम होगा एलपीटी पर जितना वीकनिंग इफेक्ट हुआ है। मतलब जितना अमाउंट में फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स घटा है एलपीटी रीजन में, उतना ही अमाउंट में टीपीटी पर फ्लक्स में इंक्रीमेंट और बूस्टिंग नहीं होगा। कहने का मतलब द इंक्रीमेंट और स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट एट टीपीटी वुड बी लेसर देन द वीकनिंग इफेक्ट एट एलपीटी, मीनिंग इज व्हाट, नेट एवरेज फ्लक्स वुड डिक्रीज। सो नेट एवरेज फ्लक्स में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, और दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ द नेट एवरेज फ्लक्स ड्यू टू द सैचुरेशन प्रॉब्लम इन द डीसी में, प्रैक्टिकल डीसी मशीन लीड्स टू व्हाट, द रिडक्शन इन द induced EMF in armature and hence reduction in the terminal voltage of the generator or simply terminal voltage of the machine, and this effect of armature reaction is called demagnetization effect. So see, demagnetization effect is basically due to what? Due to the saturation problem in the or at the TPT of the DC machine or in generating mode. उसी तरह से demagnetization effect of armature reaction occurs due to saturation effect occurring at LPT in motoring mode of operation. So इस बात को आप ध्यान रखेंगे। So as a conclusion आप क्या पाए? आप पाए आर्मेचर फ्लक्स के प्रेजेंस में दो तरह का इफेक्ट हुआ। पहला, ड्यू टू द क्रॉसिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स there would be cross magnetization effect, and दूसरा क्या, दूसरा due to the saturation problem in the pole core or pole tips of the poles, ऐसा there would be demagnetization effect. So two effects are there, cross magnetization effect of armature reaction and demagnetization effect of armature reaction. अब देखिए क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन के चलते क्या अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, एंड डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन के चलते क्या क्या अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। सो व्हाट आर द अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस विल कम इनटू पिक्चर ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, एंड अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस विल कम इनटू पिक्चर ड्यू टू द डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन।
ओके, ऑल द डिमिनिशिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन के लिए अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस आता क्या है? बेसिकली ड्यू टू डिमिनिशिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन लीड्स टू व्हाट? रिडक्शन इन टर्मिनल वोल्टेज इन केस ऑफ जनरेटर एंड हेंस increment in the voltage regulation, and increment in voltage regulation means lowering the voltage regulation in case of generator. उस तरह अगर मोटर की बात करें, in case of मोटर नेट एवरेज फ्लक्स में डिक्रीमेंट आने से होगा क्या? नेट एवरेज फ्लक्स में अगर डिक्रीमेंट आएगा, यू नो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, सो स्पीड में इंक्रीमेंट आएगा, मीनिंग इज व्हाट? स्पीड रेगुलेशन में इंक्रीमेंट आएगा, और स्पीड रेगुलेशन जो है वो पुअर होगा। स्पीड रेगुलेशन पुअर होना मतलब सिंपली परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन खराब होगा। ओके, अब दूसरी बात करते हैं, क्रॉस मल्स इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन के चलते क्या क्या अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस पिक्चर में आते हैं। सो सी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्रॉसिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स वुड बी डायरेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, मींस रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो डिस्टोर्टेड हो जाएगा। अगर मेन फील्ड फ्लैट टॉप्ड है, आर्मेचर एमएमएफ जो है वो ट्रायंगुलर है, आर्मेचर फ्लक्स जो है वो सैडल वेव शेप का होता है, then see this resultant flux would no longer follow either the triangular wave shape or the flat topped wave shape. It would follow another wave shape, and that wave shape that you will see in wave shape analysis, that wave shape of the resultant flux would be your peaky in nature. Peaky in nature means peaky wave shape, where the peakiness of the flux or peakiness in the resultant flux comes at what? Comes at or in the TPT region. It is nearly zero in LPT region. So resultant flux में distortion होता है. So this would be now the resultant flux direction. No load condition में resultant flux यही था. Phi m is equal to phi r. Phi m is equal to phi r. This is what the resultant flux direction and no load condition. But on load condition armature flux के armature current के presence में अब क्या हो रहा है? Resultant flux now deviates from the phi m direction. So due to this resultant flux, what would be the new MNA position? You know MNA is always perpendicular to resultant flux. So MNA position will be shifted from ZNA, let's say by theta. So cross Merson effect of armature reaction के चलते पहला अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है? MNA का पोजीशन जो है वो शिफ्ट कर जा रहा है फ्रॉम GNA। अब MNA का पोजीशन शिफ्ट करने से होगा क्या? देयर वुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ सम फ्लक्स अलोंग GNA और नॉट? रिजल्टेंट फ्लक्स का कंपोनेंट जो है GNA के अलोंग एग्जिस्ट करेगा। अब GNA के अलोंग रिजल्टेंट फ्लक्स का कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब GNA के अलोंग और ब्रश के एक्सिस के अलोंग और ब्रश के अलोंग अगर कोई कंडक्टर लाई करेगा, देन उस कंडक्टर में डायनेमिकली EMF भी इंड्यूस होगा। अब EMF अगर इंड्यूस्ड होगा उस कंडक्टर में जिसमें कम्यूटेशन होना है, कम्यूटेशन हमेशा ब्रश एक्सिस के अलोंग होता है, और ब्रश अगर शिफ्ट नहीं किया गया तो हमेशा बाय डिफॉल्ट GNA पर होगा ब्रश, देन होगा क्या? कम्यूटेटिंग कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होगा, एंड डायनेमिकली EMF इंड्यूस्ड इन कम्यूटेटिंग कॉइल will drive circulating current within the coil, which leads to or which causes opposition for the current reversal during the commutation, and see this would leads to delayed commutation. So commutation में delay होगा, and meaning is what? It is desirable, undesirable? It is always undesirable. Okay, so this cross Merson effect of armature reaction leads to shifting of MNA position, and shifting of MNA position leads to poor commutation. Okay, now अब बात करते हैं armature flux is strengthening the main field flux at TPT. armature flux जो है TPT region में main field flux को strengthen कर रहा, aid कर रहा है। देना होगा क्या? conductors in the TPT region cuts more flux, so ज्यादा फ्लक्स को कट करेंगे। अब ज्यादा फ्लक्स को कट करेंगे कहने का मतलब क्या? टीपीटी रीजन में जो कंडक्टर लाई करेंगे उन कंडक्टर्स में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ज्यादा होगा। अब ये वोल्टेज, द डायनामिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर्स lying in TPT region, if it exceeds the
insulation strength or the strength of the mica insulation, then simply what? Mica insulation of the commutator will fail. अब माइका इंसुलेशन का अगर फेल्योर हो जाएगा देन होगा क्या? सभी कंडक्टर्स जो हैं और सभी कॉइल्स आपस में क्या हो जाएंगे? सॉर्टेड हो जाएंगे, और कॉइल्स अगर सॉर्टेड हो जाएंगे देन क्या होगा? सिंपली कम्यूटेटर ही डैमेज हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा, और यू कैन से फाइनली मशीन बर्नआउट होने का चांसेस होगा. So this is what your undesirable consequences due to the presence of what? Due to the presence of the armature flux in addition to the main field flux. Okay, so we'll see the next session. You see the next video on remedies of armature reaction. How to overcome these undesirable consequences of armature reaction. Okay, thank you.